Hey, hi everyone. Yes, let's continue the session. Let me know is everything fine, the audio and the video, everything is good. Okay, all good. Let's start the session. So, this is our fifth session in calculus. We are discussing calculus for maths optional. We are covering calculus for maths optional. Here last session में हमने first derivative test discuss किया था and the topic that we are currently doing is extreme values of a function है ना function in case of one variable. ठीक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने कर लिया था मैंने आपको ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था है ना प्लीज़ ट्राई अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ना नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी all right let's move on to the second derivative test today then we'll do pyqs based on it. So today's topic of discussion would be the second derivative test. This is considered to be the more general test. So whenever you come across calculus में भी sorry या फिर किसी भी सब्जेक्ट में whenever they ask you that this function is minimum at a certain value और maximum at a certain value तो जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी ना that will be your second derivative test. क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में ना एवरी टाइम यू हैव टू लाइक टेक वैल्यूज़ एंड उसमें साइन चेक करना दैट इज़ नॉट फिजिबल फॉर एवरी काइंड ऑफ फंक्शन. जैसे मान लो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उस केस में इट विल नॉट बी फिजिबल फॉर यू टू पुट वैल्यूज़ एंड चेक कि वहाँ पर जो साइन ऑफ डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है. ओनली इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत अच्छे से काम करता है बट अगर कोई और फंक्शन आपको दे दिया जाए तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अच्छे से काम नहीं करता है ना. तो आपकी मर्जी है अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है तो वहाँ पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कीजिए बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. यही आपको अपने दिमाग में रखना है ना. दिस इज़ द जनरल टेस्ट. ओके योर स्टेप नंबर 1 वुड बी स्टेप 1 find the stationary values find stationary points. These are the points where the derivative of the function is 0 f dash x is equal to 0. Step number 2 check f double dash c. Let c is the stationary point. Let c be the stationary point. तो यहाँ पर यू हैव टू चेक द साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द स्टेशनरी वैल्यू. क्रिटिकल पॉइंट्स पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करना है आपको. अगर ये लेस देन 0 है देन एफ एक्स हैज़ मिनिमा एट सी सॉरी मैक्सिमा एट सी एफ एक्स हैज़ मैक्सिमा एट सी एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन 0 अगर ये पॉजिटिव है देन एफ एक्स हैज़ मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी. बस इतना सा ही है ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. यू जस्ट नीड टू चेक द साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इफ इट इज़ नेगेटिव देन इट इज़ मैक्सिमा. इफ इट इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ मिनिमा. नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ठीक है. अब कई बार ऐसे होता है कि हो सकता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट काम ना करे है ना. जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 आ जाए उस पॉइंट पर देन यू हैव टू गो फॉर द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव then go for the sixth order derivative but उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. our questions are done in second order derivative test हो जाते हैं क्वेश्चन इसमें. let's do questions based on it. sorry let's suppose we have a question. The question is fx is equal to x square minus 3x plus 5. Let's take a very simple question first, then we'll go to medium and then we'll go to difficult questions. Solution.
First of all, find maxima and minima. So you first find its derivative, f dash x find karo. So that is 2x minus 3. Put it equal to 0. You will get x is equal to 3 by 2 here. So I got x is equal to 3 by 2. Now you find f double dash x. F double dash x is equal to 2. 2 is positive at x is equal to 3 by 2. मेरे पास एक ही critical point मिला है मुझे. And at that critical point, my function, my second order derivative is positive. So it implies fx has minima at x is equal to 3 by 2. Minima at x is equal to 3 by 2. What is the minimum value of x? 3 by 2 square minus 3 into 3 by 2 plus 5. आप यहाँ पर देख सकते हो. अब आप सोचोगे कि इसमें हमें मैक्सिमा तो मिला ही नहीं है. जरूरी नहीं है यू गेट ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. फॉर इंस्टांस इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ना, यू विल गेट ए पैराबोला हियर. एक पैराबोला आपको मिलेगा. क्या पैराबोला का ऐसे हो सकता है कि y की कितनी वैल्यू पैराबोला ले सकता है एट द मैक्स व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ y? इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ना. सो ये अनबाउंडेड रहेगा. Right everyone? So there is no maximum value here. Only the minimum value we can find. ठीक है, तो जरूरी नहीं है every function has a maximum value and a minimum value. The function may be constantly rising और एक minimum value लेकर the function will constantly rise. ऐसा हो सकता है the function takes a maximum value then the function will constantly fall. है ना. तो it is not necessary that every function has a maxima and has a minima. So जितना आपको मिलता है उतना काफ़ी है. All right, now let's do next question. Next question is fx is equal to sin x into 1 plus cos x, where x belong to the interval closed interval 0 comma pi. Solution: find its maxima and minima. Find its maxima and minima. So your very first step would be to find the derivative, put it equal to 0. So fx हमारे पास है sin x into 1 plus cos x. You write f dash x. प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर. So cos x into 1 plus cos x plus sin x into derivative of 1 plus cos x is minus sin x. You put it equal to 0. I need the stationary points here. So cos x plus cos square x minus sin square x is equal to 0, which implies it is cos x plus, isn't it cos 2x? You know that cos square x minus sin square x is equal to cos 2x. So we will use this formula. Using this formula, I'll get cos x plus cos 2x. Just a moment. Cos x plus cos 2x is equal to 0. अब क्या करेंगे? मुझे x की वैल्यू चाहिए. So you have to use every trigonometric formula so that it get reduced to a value so that I can find x from there. है ना. तो जैसे यहाँ पर cos a plus cos b है. So अगर मैं cos a plus cos b का फॉर्मूला लगा देती तो मुझे एक प्रोडक्ट मिल जाएगा. And I can take that product to be 0. है ना. यहाँ से तो I cannot conclude anything. I cannot find x from here. So you use the cos a plus cos b formula. तो वो क्या हो जाएगा? 2 cos a plus b by 2. So 2x plus x by 2. And cos a minus b by 2. That is 2x minus x by 2 is equal to 0. So यहाँ से I got cos 3x by 2 and cos x by 2 is equal to 0. Now this can be, these individual terms can be taken equal to 0. है ना. तो हमें ये factors मिल गए यहाँ पर. So it implies या तो cos 3x by 2 0 है, is either this is equal to 0 or cos x by 2 is equal to 0. You need to find every probable value. जो भी आपको critical points मिल सकते हैं ना, at which my derivative can be 0. Now cos 0 कहाँ पर होता है? At pi by 2. You know that cos pi by 2 is 0.
यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इंटरवल एज वेल. मेरा जो इंटरवल है ना दैट इज़ 0 to पाई, सो वी हैव टू रिमेन कन्फाइंड टू 0 to पाई. तो ऐसा हो सकता है कि आप सोचो कि पाई बाई टू देन 3π/2, बट इंटरवल कई बार जैसे x की डोमेन हमें दी गई है, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सो योर क्रिटिकल पॉइंट शुड बी विद इन दिस इंटरवल ओनली. इसी इंटरवल में होना चाहिए आपका क्रिटिकल पॉइंट. सो यहाँ से आई कैन से दैट 3x/2 इज इक्वल टू π/2, एंड यहाँ से आई कैन से दैट x/2 इज इक्वल टू π/2. अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप यहाँ पर और भी वैल्यूज़ लेकर देख लो, बिकॉज आई नीड x, मुझे x चाहिए ना. तो यहाँ पर इफ़ आई पुट 3π/2 इवन देन माई कोसाइन विल बी 0. यहाँ पर भी लेट सपोज आई पुट 3π/2 एज वेल. एक बार मैं देख लेती हूँ कि मुझे x क्या मिलता है. इफ़ इट इज़ विद इन आवर इंटरवल तो मैं उसको ले लूँगी ना, आई टेक दैट वैल्यू एज वेल. बट इफ़ इट इज़ आउटसाइड आवर इंटरवल वी विल लीव दैट वैल्यू, है ना. बट ऐसा ना हो कि देयर वॉज ए वैल्यू जो आ सकती थी बट आपने वो नहीं ली, तो उस केस में योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. सो इट इम्प्लाइज इफ आई टेक 3x/2 इज इक्वल टू π/2, हियर आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू पाई, हियर आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू पाई. ठीक है, एंड सॉरी x इज इक्वल टू π/3 नॉट पाई. हियर आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू π/3. And if I take 3x/2 equal to 3π/2, 3x/2 equal to 3π/2, then I'll get x is equal to pi. X is equal to pi. And here, if I take x/2 equal to π/2, I'll get x is equal to pi. And if I take x/2 equal to 3π/2 now, then I'll get x is equal to π/3. So you can clearly see I'm getting two values of x. One is π/3, that means 60 degree. The other one is pi, that is 180 degree. Our interval is a closed interval. हमारा जो interval है वो closed interval है. It includes pi as well. So that means I can take both the values. I can take both the values π/3 as well as pi. So it implies x is equal to π/3 and x is equal to pi are the critical points. Are the critical points here. ठीक है, सो मुझे स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए. नाउ आई नीड टू असेस द साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. f'(x) मेरे पास ऑलरेडी था, cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. रीराइट कर लो f'(x) को. f'(x) वॉज इक्वल टू cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यू कैन राइट इट एज cos 2x एज वेल, है ना. इसको cos 2x ही लिख देते हैं, cos 2x. नाउ व्हाट इज f'(x)? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस 2 sin 2x. नाउ यू हैव टू चेक द साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट π/3 एज वेल एज एट पाई. सो व्हाट इज f'(π/3)? दैट इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 minus 2 sin 2π/3, and this is equal to minus sin π/3, that's sin 60 degree, minus 2 sin, I can write it as pi minus π/3, which means it is the second quadrant, and second में sin positive होता है, minus sin π/3 minus 2 sin π/3 it is. So it means I'm getting minus 3 sin π/3. Sin π/3, and which is less than 0. We do not need the exact value. हमें exact value नहीं चाहिए. We just need to assess its sign, है ना. तो f'(π/3) is less than 0. It means my second order derivative f'(x) is negative at x is equal to π/3. Equal to π/3, and negative का मतलब होता है I'll have a maxima here. I'll have a maxima here. So f'(x), sorry, fx is maxima, fx is maximum at x is equal to π/3. Now let's assess at pi. π/3 पर मुझे मिल गया fx has a maxima. Now let's assess at pi as well.
So at x is equal to pi, if I look at the sign of second order derivative, तो यहाँ पर x को pi put कर दो. So this is equal to -3 sin, हाँ रुको रुको रुको, ऐड कैसे कर सकते हैं, दोनों सेम थोड़े आएंगे. माइनस साइन पाई माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 3, -2 साइन 2 पाई, -2 साइन 2 पाई. ठीक है, but you can clearly see that I'll get the derivative to be 0 here. The second order derivative I'll get 0 at pi, है ना, 0 मिल रहा है मुझे. इसका मतलब at pi I cannot say anything about the maxima or minima, and I told you then you have to go for the fourth order derivative. But इस फंक्शन में ना एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, जैसे मैं यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करूँगी, देन I'll have minus cos x minus 4 cos 2x, and if I find the fourth order derivative na, I'll again get sin x plus 8 sin 2x, and you know that sin n pi तो 0 होता है, sin n pi is equal to 0 always, so you will keep getting 0 value at the even order derivatives. Fourth order भी 0 रहेगा, sixth order will also be 0, eighth order will also be 0. So it means what? I'm not getting any maxima or minima at x is equal to pi. So it means x is equal to pi is neither a point of maxima nor a point of minima. Understood? So f4 pi will also be 0, f6 pi will also be 0. Reason being because sin n pi is equal to 0. So it means fx has neither maxima nor minima at x is equal to pi. That's it. So my function will have a maximum value at x is equal to pi by 3. This is my answer. Note it down. All right, let's move on to the next question. fx is equal to e to the power x into 1 minus x square, 1 minus x whole square. ठीक है, this is my function fx is equal to e to the power x into 1 minus x whole square. So as usual you first need to find the first order derivative. So f dash x निकालेंगे, product rule लगेगा यहाँ पर, e to the power x as it is, derivative of this is minus 2 into 1 minus x plus 1 minus x square as it is, derivative of e to the power x is e to the power x. You can take e to the power x out and it will be minus 2 plus 2x plus open this whole square 1 plus x square minus 2x. This is equal to e to the power x, 2x got cancelled out and it is x square plus x square minus 1, just x square minus 1. इसको इस तरह से भी कर सकते थे, e to the power x into 1 plus x square minus 2x, आपकी मर्जी है, ओपन करके पूरा. So I got this as my f dash x. F dash x is equal to e to the power x into x square minus 1. You put f dash x equal to 0. It implies e to the power x into x square minus 1 equal to 0. From here I can say that either e to the power x is 0 or x square minus 1 is equal to 0. अब ना एक्सपोनेंशियल के बारे में you must know that e to the power minus infinite approaches to 0 and e to the power infinite approaches to infinite. Exponential function is an ever increasing function. It is always increasing function, है ना. तो ये 0 का कहाँ पर होता है, when x goes to minus infinite, but infinity is not a real number. We don't consider it as real number. We exclude infinity out of that. So इसका मतलब है ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है. This is not possible.
So it means the only possibility is this has to be 0 in order for my derivative to be 0. So यहाँ से ही मुझे x की वैल्यूज़ मिल गई as plus minus 1. And these are my stationary points. These are my stationary points or critical points. Now let's find the second order derivative. Second order derivative निकाल लेते हैं. f डबल डैश x क्या आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लो, e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस e टू द पावर x इंटू 2x. So you take e to the power x out and it is 2x plus x square minus 1. Understood? This is my second order derivative. हमें इसका साइन चेक करना है at plus minus 1. So f double dash 1 क्या रहेगा, e to the power 1, this is 2 plus 1 minus 1 and it is equal to 2e which is always greater than 0. ठीक है, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ई की वैल्यू 2.37 समथिंग होती है, 374. तो वो तो एक नंबर है ना, तो उसकी आप नेगेटिव पावर लो या पॉजिटिव पावर लो, इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. नेगेटिव रिजल्ट तो वो हमें कभी देगा ही नहीं, इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर. सो एक्सपोनेंशियल पर ये साइन डिपेंड ही नहीं करता है. आवर साइन डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर बेसिकली, है ना. सो इफ आई फाइंड एफ डबल डैश एट माइनस 1 बिकॉज प्लस माइनस 1 आर माई स्टेशनरी पॉइंट्स. सो माइनस 1 पर भी साइन चेक करेंगे तो ये आएगा e टू द पावर माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1. दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 इज नथिंग बट 1 बाई ई एंड इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. नेगेटिव पावर ले लो या पॉजिटिव पावर ले लो, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन 0. तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है. e एक वैल्यू ही होती है, पॉजिटिव नंबर होता है. And this is minus 2 plus 1 minus 1 and I'm getting minus 2 by e and which is less than 0. So इसका मतलब है at 1 my second order derivative is positive. At x is equal to 1 f double dash x is greater than 0. पॉजिटिव है और जब भी पॉजिटिव होता है तो आई विल हैव ए मिनिमा. सो मिनिमम वैल्यू, मिनिमा एट 1. Minima at 1. And since this is less than 0, so at x is equal to minus 1, my second order derivative is negative. F double dash x is less than 0. Means it is negative. Negative पर क्या होता है, मैक्सिमा होता है. So we will have maxima here. ठीक है. So अगर हमें f minimum find करना है तो f minimum is equal to value of f at 1 because minima is at 1. Positive means minima and negative means maxima. So what is the value of f1? E to the power 1 into 1 minus 1 square which is equal to 0. And what is the value of f maximum? F maximum कहाँ पर होगा, minus 1 पर. So we need to find f at minus 1. So this is equal to e to the power minus 1, 1 minus minus 1 whole square. So this is equal to 1 by e into 1 plus 1 2 square, that is 4, so 4 by e. So this is my final answer. F minima is 0 and F maxima is 4 by e. So you can note it down. Okay, now let's move on to the next question. Next question is fx is equal to log x by x. Check maxima and minima. X is between 0 to infinite. X is greater than 0, less than infinite, है ना. See, about the logarithm function, let me tell you a few things. First of all, log 0 approaches to minus infinite, है ना. Log infinite approaches to infinite, plus infinite. Log 1 is equal to 0, right? जैसे logarithm का जब आप ग्राफ देखोगे ना, the graph of log function, log x, वो कुछ इस तरह से बनता है.
ठीक है. एज यू कैन क्लियरली सी व्हेन माई एक्स इज लेस देन वन, है ना. जैसे यहाँ पर दिस इज बेसिकली दिस इज वन बिकॉज हियर log 1 इज 0, यू नो दैट. तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है. सो इट मीन्स हियर द वैल्यू ऑफ log x इज इक्वल टू 0. और आप देख सकते हो 0 से इधर तो इसका ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सो व्हेन x इज लेस देन 0 ना, ग्राफ ऑफ log x डज नॉट एग्जिस्ट. सो x लेस देन 0 के लिए तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. सो log x की डोमेन क्या होती है, x ग्रेटर देन 0 होती है. x ग्रेटर देन 0 इज द डोमेन ऑफ log x. एंड बिटवीन 0 एंड 1 ना, बिटवीन 0 एंड 1 can you tell me the value of y when x is between 0 to 1? You can't tell ना. ये जो नीचे this is like asymptote, इसको हम asymptote बोलते हैं. So here you can clearly see that y goes to minus infinite. y is going to minus infinite. You never know कि ये line कहाँ पर end हो रही है. So at x between 0 and 1 ना, between 0 to 1 we will get negative values of log x, and 1 के बाद it will cross the x axis at 1. 1 पर log 1 0 होता है हमारे पास. So at x is equal to 1 it will cross x axis and इसके बाद it will take on forever positive values. So when x will be infinite ना, when x will approach to infinite, log infinite approach to plus infinite, तो उसके बाद ये हमेशा पॉजिटिव होता है. बट बिटवीन 0 to 1 log x टेक्स नेगेटिव वैल्यूज़, है ना. 0 और 1 के बीच में log x टेक्स नेगेटिव वैल्यूज़ एंड log 0 अप्रोचेज टू माइनस इनफाइनाइट, है ना. इट इज़ लाइक 0 पर एसमटोट मिलता है हमें, बिकॉज y का वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा. एसमटोट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, एक टॉपिक है. बट आपको यू शुड नो समथिंग अबाउट लॉगरिथम फंक्शन, व्हाट इज़ इट्स डोमेन एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 0, log इनफाइनाइट, log 1, है ना. Solution. Okay, you first need to find its derivative, put it equal to 0 in order to find the critical points. So चलो f dash x पहले निकाल लिया जाए, है ना. We will need division rule here because my function is fx by qx type, fx by gx type. So division rule लगाओ यहाँ पर. x log x, x as it is derivative of log x is 1 by x minus log x as it is derivative of x is 1 divided by x square. This is equal to 1 minus log x divided by x square. Now if I take f dash x to be 0, it implies 1 minus log x is equal to 0. Numerator has to be 0. So it implies log x is equal to 1. That means x is equal to e. x is equal to e. Log e is equal to 1. ओके, अब हमें चेक करना है. दिस इज़ माई क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज़ माई ओनली क्रिटिकल पॉइंट, है ना. सो दिस इज़ माई ओनली क्रिटिकल पॉइंट. नाउ आई नीड टू असेस द साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ई. सो एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे. ये हमारा एफ डैश एक्स था ना. सो यू फाइंड एफ डबल डैश एक्स एंड अगेन डिविजन रूल लगेगा. So x square as it is, derivative of 1 minus log x is minus 1 by x minus 1 minus log x as it is, derivative of x square is 2x basically, divided by x to the power 4, x to the power 4. So ये cancel out हो गया. So this is equal to minus x minus 2x plus 2x log x divided by x to the power 4, which is equal to minus 3x plus 2x log x divided by x to the power 4. Okay, now I need to assess the sign of f double dash x at x is equal to e. So f double dash e देखेंगे क्या आता है. x को e पुट करो, so minus 3e plus 2x log e, 2e log e divided by e to the power 4. सी जो डिनोमिनेटर है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ फोर्थ पावर प्लस इट इज़ एक्सपोनेंशियल. एंड न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, log e 1 होता है. सो माइनस 3e प्लस 2e log e इज़ 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस e बाई e टू द पावर 4 विच इज़ क्लियरली लेस देन 0. ये आएगा माइनस 1 बाई e क्यूब, सो विच इज़ क्लियरली लेस देन 0. सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ई. और जब नेगेटिव होता है तो फंक्शन का क्या वैल्यू लेता है, मैक्सिमम वैल्यू लेता है.
So fx has maxima at x is equal to e. And what will be f maximum? F maximum is equal to जो हमारा फंक्शन था ना, द ओरिजिनल फंक्शन, पुट x इज इक्वल टू e इन fx, put x is equal to e in fx, so log e divided by e, so this is 1 by e, and this is my final answer. You can note it down. All right, let's move on to the next question. fx is equal to 1 by x to the power x, 1 by x to the power x. ठीक है, 1 by x to the power x. Find maxima and minima of fx. Now this is a very good question, है ना? Important mark कर लो इसको. Okay. So here, whenever you come across any such function where phi x is given to us as some function of x to the power some other function of x, उस केस में you take logarithm on both the sides. दोनों तरफ log लेना पड़ेगा हमें in order to find the derivative, है ना? So take logarithm on both the sides. तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? Log of fx to the power gx to the power gx. And you know that log a to the power b can be written as b log a by the very property of logarithm, है ना? So this is equal to gx log of fx, gx log of fx. Now you differentiate both the sides. Now you differentiate on both the sides. On both sides. So you first need to take logarithm here. Whenever you see your function to be like this, कि some function and then in power there is some other function, ठीक है? जैसे यहाँ पर 1 by x to the power x है, so I'll first take the logarithm here. So log of fx is equal to log of 1 by x to the power x, and this is log fx is equal to, ये आ जाएगा x log 1 by x, x log 1 by x. Also, can I write it as minus x log x? कैसे? Using the property that log a by b, sorry, log 1 by b is equal to minus, can be written as log b to the power minus 1. And power बाहर आ जाता है logarithm में, so I can write it as minus log b. I can take the power out, so minus log b बन जाएगा. So from here I can take, this is x to the power minus 1, so I can write it as minus x log x. Understood? By this property I have done this, है ना? तो ये नोट कर सकते हो. Okay, you now differentiate on both the sides. दोनों तरफ differentiate कर दो. Differentiate on both the sides. Now derivative of log fx is 1 by fx into f dash x is equal to, you differentiate it with respect to x, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस बाहर ले लेते हैं. x as it is log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x as it is x का डेरिवेटिव 1. So this is equal to minus 1 plus log x. ठीक है? So you can clearly see that f dash x is equal to minus fx into 1 plus log x. From here, f dash x is equal to minus fx into 1 plus log x. Now I need to put derivative equal to 0 in order to find critical points. So put f dash x is equal to 0, which implies minus fx into 1 plus log x equal to 0. From here I can get the result कि या तो मेरे पास fx 0, entire function is 0, or 1 plus log x is equal to 0. Now the entire function equal to 0, is it ever possible? The function that is given to us, that is a 0 function.
ये तो नहीं हो सकता है ना, इट कांट बी ए नल फंक्शन. सो ये तो दिस कांट बी पॉसिबल, सो नॉट पॉसिबल. So it implies the only result here is 1 plus log x is equal to 0. And from here I can say that log x is equal to minus 1. And from here I can say that x is equal to e to the power minus 1. Or you can say x is equal to 1 by e. And this is my only critical point in this question. Only critical point. X is equal to 1 by e. Now I need to assess the sign of f double dash x. तो f dash x हमें यहाँ पर मिला था. This was my f dash x. I need to find f double dash x first. So f double dash x is equal to minus, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा. दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना. तो एफ डैश एक्स इंटू 1 प्लस लोग एक्स प्लस एफ एक्स एज इट इज, and the derivative of 1 plus log x is 1 by x, 1 by x. Now I need to check the sign of second order derivative at x is equal to 1 by e, which is the only critical point I'm getting here. So you put x as 1 by e. And this is equal to minus f dash 1 by e into 1 plus log 1 by e plus f of 1 by e into 1 by 1 by e. So I inserted x is equal to 1 by e here. अब आप खुद ही बताओ, at 1 by e my first order derivative was 0. Alright, my first order derivative was 0 at 1 by e. That's how I got this as critical point. वहाँ से ही तो ये critical point मुझे मिला था. At 1 by e my first order derivative is 0. तो ये वाला टर्म तो वैसे ही 0 हो गया, because f dash 1 by e is 0. So here I got minus, ये तो 0 हो गया, plus f of 1 by e, and 1 by 1 by e can be written as just e. ठीक है. So I got minus e f of 1 by e. Now if you put 1 by e in your function, fx में 1 by e put करोगे तो आपको मिलेगा minus e into 1 by 1 by e to the power 1 by e. And let's not drag this further, हमें तो बस sign assess करना है ना. So this positive and there is a negative sign here. So overall this is less than 0. So it means the value of the second order derivative at the critical point is negative. And if it is negative na, it implies there will be a maxima at x is equal to 1 by e. So x is equal to 1 by e is a point of maxima here. So we have and we got the answer as e to the power 1 by e. And this is my final answer. You can note it down. E to the power 1 by e is my final maxima. Moving further, we have the next question, last question for today. Find maxima or minima of 1 by x square to the power 2x square. X is greater than 0. Mark it as important. The interval of x is given as greater than 0. X can only take positive values here. So solution. Again, this is a type of function कि some function to the power some other function. So I need to take a logarithm here. So let fx is equal to 1 by x square to the power 2x square. So I first need to take logarithm on both the sides. So log of fx is equal to log 1 by x square to the power 2x square. So log fx is equal to, simplify it a bit, same formula use करेंगे. The power will come forward, 2x square log 1 by x square
and this can be written as 2x square log x square to the power minus 1, or you can say that 2x square log x to the power -2. It is as simple as that, and this power will again come forward, so ये हो जाएगा -4x square log x, -4x square log x, using the same properties of logarithm. So log fx is now equal to -4x square log x, and I need to find the first order derivative. I need f dash x, so you will differentiate on both the sides. So differentiating on both the sides, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? दिस विल बी 1/fx एंड डेरिवेटिव ऑफ fx, दैट इज f डैश x, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी -8x log x, -8x log x. मैंने क्या किया, log x को मैंने एज इट इज़ रखा है. नाउ कीप -4x स्क्वायर एज इट इज़, एंड log x का डेरिवेटिव 1/x. सो दिस इज इक्वल टू -8x log x -4x. So it means f dash x is equal to fx into -8x log x -4x, and I can take -4x out. This is equal to -4x out fx into, it will be 2 log x plus 1, taking -4x out, 2 log x plus 1. And if I take f dash x to be 0 ना, because I need critical points, so यहाँ से I can say या तो x 0 होगा, either x is equal to 0 or fx is equal to 0. There are 3 factors ना, तो each factor can be 0 in order to get the 0 value. So I need to put each and every factor equal to 0. So 2 log x plus 1 equal to 0. ये हो सकता है, this is a possibility, but this is not a possibility, not possible. Why is it not possible? fx अगर null function ही हो गया, then can we talk about maxima or minima of a null function? It is only taking 0 value, so it is a constant function in that case, है ना. तो वो तो फिर अपना क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा. So 2 log x plus 1 is equal to 0, it is possible. So I can say that log x is equal to -1/2 and x is equal to e to the power -1/2. That means x is equal to 1/√e. So मुझे यहाँ से 2 critical points मिले. एक तो x is equal to 0, but एक और चीज़ है. देखो अगेन मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. x is given to be greater than 0, so we can't take x is equal to 0 as well, है ना. यहाँ पर उसने कंफ्यूज कर दिया है. इफ़ यू टेक x टू बी 0 ना, एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर लेगा बिकॉज यू डिड नॉट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है, x इज गिवन टू बी ग्रेटर देन 0, सो वी कांट टेक x इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, एज x इज गिवन टू बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो माई ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज दिस, x इज इक्वल टू 1/√e is only critical point I have, only critical point here. So now I need to find the second order derivative so that I can see the sign, I can check the sign of the second order derivative at 1/√e. So f double dash x फाइंड करेंगे. ये था ना f dash x हमारा, तो fx एज इट इज़ रखते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, डिफ्रेंशिएट दिस, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -8 log x -8x इंटू 1/x, एंड डेरिवेटिव ऑफ -4x इज -4. नाउ प्लस डेरिवेटिव ऑफ fx इज f dash x and -8x log x -4x as it is. Okay, so I'm getting this is equal to fx -8 log x -8 -4, that is 12, so -12, plus f dash x -8x log x -4x. Now you put x as 1/√e, so f double dash 1/√e is equal to f at 1/√e
-8 log 1 by root e -12 plus f dash 1 by root e 1 by root e -8 into 1 by root e log 1 by root e -4 into 1 by root e 1 by root e। अब देखो अगेन यहाँ पर सेम सिनारियो है कि f डैश 1 by root e तो मेरे पास 0 ही है ना। आई एम गेटिंग 1 by root e एज द क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज द डेरिवेटिव एट 1 by root e इज़ 0 है ना, तो ये तो ऑलरेडी 0 है मेरे पास। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्टर तो 0 ही हो गया। सो मेरे पास सिर्फ फर्स्ट फैक्टर बचा, तो फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व करना पड़ेगा। आई कैन टेक माइनस आउट 1 by root e isn't it 8 log e to the power -1 by 2 plus 12 लिख सकते हैं इस तरह से। एंड यू नो दैट पावर कम्स फॉरवर्ड इन केस ऑफ लॉगरिथम, तो ये आ जाएगा 8 इंटू -1 by 2 log e एंड प्लस 12। दिस इज इक्वल टू माइनस f 1 by root e log e हमारे पास 1 होता है, सो 2 4 जा 8 एंड 12 minus 4 इट इज़ -4 plus 12। सो isn't it equal to minus, होपफुली आई एम करेक्ट हियर, कुछ मिस्टेक हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लेना अगर होगा भी तो इसमें मे बी कॉन्स्टेंट्स का मिस्टेक हो सकता है, साइन का मिस्टेक नहीं है, है ना। सो दिस इज -8 f 1 by root e, है ना। सो इजंट इट लेस देन 0, ये लेस देन 0 ही मिलेगा आपको। सो इट इम्प्लाइज f डबल डैश x इज नेगेटिव लेस देन 0 और नेगेटिव एट x इज इक्वल टू 1 by root e। और जब हमारे पास नेगेटिव होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, then it is a point of maxima. So maxima at x is equal to 1 by root e. That's it. So maxima at x is equal to 1 by root e. If I wish to find f maximum, then this is equal to f at 1 by root e, and you can put 1 by root e in your function. जो आपका फंक्शन था ना, that was 1 by root e square to the power 2 into 1 by root e square, and this is equal to, ये नीचे आ जाएगा 1 by e to the power 2 by e. So it implies it is e to the power 2 by e, and this is my final answer. This is the maximum value of f that I'm getting. You can note it down. सो सिंपल इट वॉज, है ना। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क ना, प्लीज ट्राई सॉल्विंग देम। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 by 2 साइन 2x प्लस 1 by 3 sin 3x, x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0, pi, है ना। तो ये सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करना होमवर्क में, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos square x प्लस साइन टू द पावर 6x। I'll tell you the answer in the next session ना। Try solving them, find the maxima and minima in each question। जैसे मैंने करवाया है बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है, ठीक है। चलो, all right then, let's conclude it here. I'll see you in the next session,
है ना. नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डूइंग PYQs बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, है ना, कैलकुलस के, फ्रॉम 2010 to 24. Okay, then bye everyone. Take care.